Hey, good evening, everyone. Paper 6 Auditing and Assurance. Welcome to the world of computers in audit. So, can I have a present, sir, from all of you attending this batch for Chapter 6? Ms. Kiran Shukla, Ms. Shivangini Rathore, Ms. Bhumika, Mr. Sudhanshu Shekhar, Ms. Mariam Tanzeem, Ms. Diksha Agarwal, Mr. Ketan Patel. What about others? So you have to show your presence to me, right? So till now, you have been studying about the basics of audit in Chapter 1, Chapter 2, audit related aspects, Chapter 2 and 3, some stretched aspects, documentation, evidence. Chapter 4 about, it's a heavy chapter, Chapter 4, risk assessment and the internal controls. Oh, wow, nice. Neeraj Harlaka, Darshan C, Gurdeep Singh, Mohit Saini, Akshay Kumar, Dipanshu, Jay Suneja, Vignesh Singh, Rajiv Kumar, okay, Loga Sundar, Krishna Bagoria, Manisha, Patan Sultana, Sanjeet M, Tanu Kumari, Hira Hussain, Kushi Jain, and Suraj Basi. Okay, nice. So, how's the journey been till now? अब तक का सफर कैसा था? What are you feeling about audit? Your feelings about audit as a subject and to be tackled as an exam. This is the most important subject. Chartered accountants and auditing. It's not about Saat Janam, it's about many, many, many births. Right? So, it's fine, Suraj. So, just initial 5 to 10 minutes, let us be comfortable with each other before we start with the chapter. It's a technical chapter. So, I need to know what you guys have done till now. अभी तक आपने क्या क्या सीखा है, क्या क्या किया है, अच्छे से समझा है. Have you understood about standards? Have you understood about what are assertion at the account balances level, assertions at the financial statement level, and what are compliance procedures, what are substantive procedures, what is professional skepticism, what is professional judgment, what are the threats to independence of an auditor, what is audit documentation, audit evidence, and what are the risks associated while auditing, then your internal controls, then the last chapter, fraud in financial statements. You all must have turned into forensic auditors, huh? Karamchand Jasus. Right? With chapter 5, forensic auditing. And it's got a good scope. Forensic auditing, forensic accounting is a good scope in future. Miss Shukla, it's a theoretical subject. It's a theoretical subject, but it's like you have to apply what you have learned in your, you know, daily business. What is it about? Like your profession. So it's quite interesting. It's quite in a knowledge enriching subject, and what you have to take care of while attempting answers to the questions in this subject. You know? You read everything, you learn everything, you cram everything, but what needs to be understood is understanding the concepts is one thing, and giving an answer to the question posed is another thing. You might have read about the concepts really well, you understood them really well, you have learned them very well, you've revised them excellent. Now it's the time to present it, huh? So yeah, it's evening time and your mother is cooking dinner. No, मम्मी खाना बना रहे हैं and बहुत अच्छी बढ़िया खुशबू आ रही है रसोई में से, किचन में से, हाँ. And you're like बहुत अच्छा आज तो डिनर मतलब
you're like just in for a treat. And when you are given the dinner, plate सामने आती है, and you see where is the roti going, where is the sabzi going, where is the dal going, सब कुछ अस्त व्यस्त है, it's not well presented. So what do you feel? उस खुशबू का, सब्जी के अच्छे स्वाद का, and अच्छे टेस्ट का, what was the benefit? No, because it was not presented well. You'll get to enjoy the meal only when it is presented well. Same is the case with your subject, theory subjects, especially audit. So make sure while studying audit, while understanding the concepts, and while learning the concepts, make sure before appearing for exam, you also practice them in written. How are you going to present your answers? What professional jargon you are going to use? कौन से technical terms हैं जो आपको use करने हैं? और कौन से ऐसे आपको tips and points हैं जो आपको answers में use करने हैं? Specific questions का specific answers. It's not like it is a khichdi which you are going to give in every answer. थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा वहाँ. No, it is not going to fetch you marks. So all of those, it's really encouraging to know that you are finding it really interesting. It is indeed an interesting subject, but what you need to take care of is how to present what you have learned in your exams, and for that written practice is must. Make that sure. Okay. Right. So let's move ahead. As I told you that you are done with the basics of audit. If I divide your syllabus, your chapters, so it could be the basics of audit, chapter 1 to 4. You learn about what is auditing, the basics, the independence, the threats, the documentation, the evidence, everything, the controls, the risks. So that is one block you complete. Then you start with the next block, that is fraud and automated environment. Then you go with the sampling procedures, the analytical procedures. These are the tools used in auditing. Now, when you're done with the basics, you are done with the tools, you start applying them. You get into action. Now it's time for practical. You apply them in chapter 9, you apply them in chapter 10, 11, 12, 13. So this is how till chapter 8, you study whatever you are going to implement. How are you going to execute the audit procedures? And from chapter 9 to 13, you start executing those procedures in different scenarios. So this is how I divide the audit subject index into 3 to 4 parts. That makes approaching the subject easy. So today we are here with topic of audit in an automated environment. Audit, you all are well versed with what is audit now, till now, and automated environment. So this chapter is going to be using some technical terms. You might, if you are simultaneously studying for the chapter for the subject EIS, so it will not be that heavier, but we'll try to make it as lighter as possible. So how do you conduct an audit in an automated environment where there are computers, where there are systems, there are automated operations, manual intervention is negligible or too less? So how do you approach that environment? So this is how we are going to study this chapter. We'll have a bird's eye view of the chapter. Then we'll understand the chapter by the means of this presentation. A conceptual understanding is very must. Then we have some practice questions. We'll have MCQs, correct, incorrect, case studies. We'll take up a case study after completing this chapter. So in the next class, when we complete this chapter, we'll discuss a case with respect to this chapter only, and we'll answer some questions based upon those that case. So case study type question, descriptive questions. Then we'll have a summary of the chapter, and finally we'll be discussing how to write answers to the questions from this chapter. How do we use professional and technical terms and words? So
chapter of the day, chapter 6. It's along with chapter 4, its weightage is 15 to 20%. So how are we going to proceed further with this chapter? What is our blueprint? So I've divided the chapter into 3 parts, right? Please bear with me on this sound because I've tried to do it, but actually, so yes, so divided the chapter into 3 parts. Here we go. Part 1, that is the general part. What is then an automated environment? What are its key features? Then there is this part, what is the relevance of information technology in audit? How is the auditee environment considered with respect to the use of information technology, and how can IT benefit the auditor as well? Then we have the part 2, which deals with the risks in an automated environment. As we have studied the general risks in chapter 4, controls in an automated environment, and testing of controls in an automated environment. So whatever you have done till chapter 4, now you are applying everything with respect to an automated environment. So minor to major changes to what you have studied, that you have studied in a normal environment, right? Hybrid environment where there are people as well as systems. So how does it change in an automated environment? Computers के use के साथ वो environment कैसे change हो रहा है, आपके risk कैसे change हो रहे हैं, controls, internal controls कैसे change हो रहे हैं, और उनके testing पे क्या असर हो रहा है. So हम पढ़ेंगे risks and control in an automated environment. We will understand the different risks and controls. How do we need to document them? Then we will understand what is the impact of IT related risks. So there are risks, that is one thing. अब वो IT से related है, उनका क्या impact आएगा environment पे and business environment पे और हमारे audit पे. Then what are the types of controls in an automated environment? With systems, the controls might change. The basic controls are the same, but automated environment mein IT related controls might change. Then we have the testing methods, how to test these controls. The last part is the important topics, which are miscellaneous topics, like we have the internal financial controls. Then we have data analytics. That is very, very important. Data analytics. Then we have audit findings of the auditor in an automated environment. Okay. So first is the general part. What is automated environment and what are its features? So this is a question. This is an exam question as well. It was a 4 marks question asked in the institute exam, CA exam. What is automated environment and what are its features? Quite straightforward question. Even then, students used to score 2 marks, 1.5 mark. The reason is they just understand the concept and try to write in their layman language without using technical terms. Audit in itself is a technical subject, you know, it has its own professional terms. And when you have technicality in more technicality, you are attempting a question from the chapter of automated environment. So the use of professional words becomes really important. So how do we learn definitions? Can some of you tell me how do you learn definitions? Define this. What is this? You know. So how do you define audit? How do you define financial statements? How do you define assertions? How do you define internal controls? So how do you learn these definitions after understanding it? Please share with me your strategy. How do you learn these definitions? Come on. तुम्हारा इंटरनेट स्लो है, मेरा स्लो है. Okay, right. I'm receiving your answers. Just write it in, like, cut it short. Don't try to write, bigger replies.
You break the definition and study it. Keywords and break the definition in small points, good. Dividing and understanding in parts and then learning only, very good. Right? Try to break it in parts and that's it. Yeah, you try to break it in parts. So whatever definition you learn over here, always try to break it into parts. And each part should have an objective. Then you'll be able to understand and learn, memorize each and every definition. So here we have broken it into parts. So an automated environment basically refers to, first of all, it is a business environment. Ultimately, in the end, it is a business environment. It is using computers to a greater extent. That is why it is an automated environment. So basically, it has come out of a business environment. So a business environment, a normal business environment where the processes, the work, the operations, the accounting, and even decisions. So these are the works done in a business environment normally are carried out by using computer systems, also known as IS or IT systems. Very simple. So automated environment is a business environment where all the functions that occur in that environment, with the processes, the operations, accounting operations, financial decisions, everything is carried out by using computer systems known as information systems or IT systems. That's it. Definition learnt. 3 steps, 3 logics, and we are done with the definition. Then what are the features of the automated environment? When there are computers, there is AI, enables faster business operations. Obviously, the speed, the pace would be higher. कंप्यूटर का पेस हमसे ज़्यादा है ह्यूमन से. Accuracy in data processing and computation. Although there are instances where computers go wrong, but only when the programs have been tampered with. You know, so if everything is fine, they are more accurate than humans. Although humans have developed them, but still they are more accurate than humans. They have ability to process large volumes of transactions. If any of you has worked on Microsoft Excel, you will understand this aspect. Ability to process large volumes of transactions. Integration between business operations. Have you guys heard about SAP, ERP, or read about it in your EIS subject? SAP and ERP? Any of you? Or any of you experiencing the working on SAP or ERP during your articleship? So you'll get to understand what is the integration between business operations. SAP is usually implemented by large organizations. It is a software which is for the whole company, the different departments, the procurement, the purchase, the sale, the marketing, the finance. It's like a bigger dashboard. So there is integration between business operations. They are all working hand in hand. This is what integration between business operations means. Oh, okay, fine. So you'll get to know about it while you start studying EIS. Better security and controls. You understand the example of biometrics and the phone you are using, the mobile phone. So the passwords, the fingerprint sensor, the retina scan. Nobody can just take your phone and scan his retina and yeah, done. Phone opens up. No. So if it is in the custody of anyone else, somebody else takes up your phone and
They can go through all your conversations, whatever is there in your phone, but you have artificial intelligence, the retina scan, the biometrics, the finger sensor, or a pattern or a pin. Better security and controls. Okay, then less prone to human errors. Obviously, it is a machine which is working, so it would be less prone to human errors unless and until the humans are working on it simultaneously, or they are feeding wrong information to it. Then there is no other alternative. There will be errors, but on their own, machines are less prone to human errors, provides latest information, connectivity and networking capability. But obvious, connectivity is like we have connectivity through this technology only. Humans sitting at different places still connected through web. So this is what are the features of automated environment, right? So a simple question asked in exam: what is automated environment? What are its features? It's in front of your screen. Oh my God. Relevance of IT in audit. With the This is something which is just a read. Okay, so we are using information technology to a greater extent nowadays. Um, there's a story behind it. 90s का दौर था. You all know about the new economic policy of 1991. I hope you all know. We are commerce people. Our story starts from new economic policy. I have read much about the LPG policy, liberalization, privatization, globalization. So computers क्या थे 70s 80s में डेवलप हो रहे थे इंडिया के बाहर. Indians, I suppose they were not knowing about the computers. 70s या 80s में एक मोबाइल फोन आया था. It's like costed around 7-8 lakhs. Cost around that huge money. 90s का advent, we opened the doors to the globe for Indians, even for the globe to connect to India, and even for the Indians to connect with the outer world. So it's not about the humans who are going to areas out of India for study, for business, migration purposes, or people from other parts of the country are also coming in India from other countries for investment purposes. And that's how India was introduced to the world of computers in the era of 90s. So suddenly you will see that whether it is the banking structure 2013, like 2011 to 13 was the time period when Indian banking structure was overhauled. If you go for a bank audit as an article, you'll see that in their systems they have records from 2013. Before that, they have all physical records or stored in a different electronic form. Because majority, almost all of the banks were centralized. Branch operations were integrated with head office operations in the year 2011 to 13. So step by step, the information technology was being adopted in an increased manner. We are today relying on software systems and applications more than ever. और ये एप्लीकेशन सिस्टम्स हमारे लिए डेटा देते हैं जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में यूज करते हैं. एक ऑडिटर इसी डेटा और रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है जो ये सिस्टम निकाल कर हमें देता है, जिसके बेसिस पे हम अपनी ओपिनियन बनाते हैं और एज एन ऑडिट एविडेंस उसको यूज करते हैं. So it becomes critical for an auditor to understand what could be the risks in an automated environment जिसकी वजह से
जो हमें डेटा मिल रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वो डेटा रिलायबल है या नहीं है, ऐसे कौन से रिस्क हैं जो इस एनवायरनमेंट में उस डेटा को अनरिलायबल बना सकते हैं. So complexity also, the more automated a business environment is, the more complex it is, right? So whenever there are systems, some people, how complex this environment gets. So survey says that a study says when the banks were centralized, majority people belonging to the age group of near retirement age in banks took VRS, voluntary retirements. They did not want to get a knowledge of this complex environment. They were like, we have worked whole our life in manual mode. Now it is out of our horizon to understand this complex environment. And the same uh, lies true for the auditor as well. For auditor as well, the situation is more complex to audit when it is an automated environment, right? So companies, yes, they derive benefit from the use of IT systems because various business operations and activities can be integrated. I suppose it is true that the use of IT systems and automation benefit the business by making operations more accurate, reliable, effective, and efficient. Have you understood the difference between effective and efficient? Okay, Gurdeep Singh, integration is what? Uh, there is this organization, Gurdeep Singh, right, where you're not using any such kind of software. So in the factory manager requires a certain raw material X. चलिए हम आइसक्रीम बनाते हैं. So आइसक्रीम के लिए that factory manager, right? So he needs the flavoring substances, the natural flavors. So what does he do? He places a request. How will he place a request to the company's purchase department? Or if he wants it from the godown of the factory, he'll have to place a request with the acquisition department or the store manager. So what did he do? WhatsApp पे अरे मेरे को इतना किलो ये भेजना, इतना लीटर ये भेजना, या मेल करेगा, या किसी को पकड़ेगा ऑफिस बॉय को बोलेगा जाओ वहां से ये लेके आओ, ये मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, इतना सामान वहां से लेके आओ स्टोर में से, गोडाउन में से. और वो रॉ मटेरियल गोडाउन में भी नहीं है तो कहेगा परचेज करना है. अब परचेज करना है तो उसके बाद जाओ जाओ परचेज डिपार्टमेंट में जाओ, वहां पे जाकर उनके देखे अभी हमें इतनी रिक्वायरमेंट है. क्या हो रहा है यहाँ पे? बेसिकली टाइम एंड ह्यूमन एनर्जी दोनों का कॉन्स्ट्रेंट आ रहा है. आप चाहे मेल कर रहे हैं, आप चाहे व्हाट्सएप कर रहे हैं, कोई एक स्मूथ प्रोसेस नहीं है. गुरदीप सिंह, इंटीग्रेशन का मतलब है आपके पास एक सॉफ्टवेयर ऐसा अवेलेबल है जो पूरी कंपनी में, लाइक ब्लड फ्लोज इन द ह्यूमन बॉडी, पूरी कंपनी के पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स का उसका एक्सेस है, ऑपरेशंस इंटीग्रेटेड है, सेल्स, परचेजेस, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, अकाउंट्स, फाइनेंस, जिसको जब जो इंफॉर्मेशन चाहिए उस सॉफ्टवेयर में से इजीली अवेलेबल है या रिक्वेस्ट की जा सकती है. आपको एक्स्ट्रा ह्यूमन एफर्ट या मेल्स करने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट फॉर इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस. ठीक, दैट इज व्हाट इंटीग्रेशन इज. इंटीग्रेट ऑल द प्रोसेसेस, the process of operations, the process of production, the process of distribution, the process of ordering, all integrated at one place through one common software which runs throughout the organization. That is integration.
Sudhanshu, you'll get to read about it in your EIS subject. What is ERP? It is a kind of a software, right? So the legal aspect. Now, it's not about audit only, the practical aspect, the legal aspect as well. So the Companies Act 2013, there is a concept called internal financial controls from a regulatory point of view. Regulatory is the regulatory bodies like the MCA. They regulate the, the entities falling under their structure. So we'll read about internal financial controls when this topic comes. I'm skipping the fifth point. I'm not taking up the fifth point. I'll take it up when we have the topic of internal financial control. You just need to know that the legal aspect, the law, also understands the relevance of IT in audit or in your business environment, and they've also come out with some reporting requirements on this aspect. उन्होंने भी डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स के ऊपर कुछ जिम्मेवारी डाली है. अब अपनी अपनी रिस्पेक्टिव रिपोर्ट्स में इसके बारे में हमें बताएंगे, उसके बारे में शेयर होल्डर्स को लिखेंगे, स्टेक होल्डर्स को. ठीक. हाँ, दिस इज व्हाट आई वाज आस्किंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. तो शिवांगिनी सेज effective means quality and efficient means quantity. ये quality quantity okay. चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. आपने ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ा, समझा, लर्न किया, रिवाइज किया और पीरियड आपका रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, राइट. इस पूरे प्रोसेस में एफिशिएंसी कहां पे आती है और इफेक्टिवनेस कहां पे आती है, वो मुझे बताइए. आपने ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ा, समझा, लर्न किया, रिवाइज किया, प्रैक्टिस किया, एग्जाम में अपीयर हुए, एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, रिजल्ट बहुत अच्छा आया, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, अच्छा आया, दोनों लेके चलो. तो यहाँ पे हम एफिशिएंसी कहाँ मानेंगे और इफेक्टिवनेस कहाँ मानेंगे. यस मिस गुडूरी, राइट. व्हाट अबाउट अदर्स. इस एग्जांपल के ऊपर तुम भी बताओ, कहाँ एफिशिएंसी और आ रही है और कहाँ इफेक्टिवनेस आ रही है. Okay. Preparing process, Shubham says, is effectiveness and exam days efficiency. Shubham उल्टा बोल दिया. Yes, effective comes after efficiency. Very good, Suraj. Result is effective, studies efficiency. Yes, good, Tanisha. No, Darshan. No. Good, good, Varsha. Good, Rajiv Kumar Singh. No. See, how well you prepare for a work. How well are you doing that work? You know, the best mechanisms in the least possible time, that is your efficiency. And what are the results obtained? That is effectiveness. So I studied for 8 months and I passed the exam. I studied for 4 months and I passed the exam. There are two friends. Okay, let us take two people in example. Let us take Himanshu Pathak and Kiran Shukla. So please don't take it otherwise. Huh? We are just taking examples. Himanshu says, Kiran, I studied for 8 months and see, I've cleared my audit exam. I studied audit for 8 months.
Kiran says, Himanshu, I studied for 4 months. And see, I've also cleared my audit exam. So, whose approach is more effective? Kiran or Himanshu? We cannot differentiate because effectiveness is considered with results. Effectiveness is results. रिजल्ट में तो दोनों पास हो गए, किरण भी पास हो गए और हिमांशु भी पास हो गए, तो दोनों का इफेक्टिव रहा रिजल्ट, दोनों पास हो गए. नाउ कम्स द क्वेश्चन, हु वाज मोर एफिशिएंट, हिमांशु और किरण? हिमांशु ने 8 महीने में तैयारी किया, पेपर क्लियर किया. किरण ने 4 महीने में तैयारी की और पेपर क्लियर किया. तो हु इज मोर एफिशिएंट? Exactly. In another example, Himanshu will take you to be on the brighter side, right? These are just examples, so please don't mind it, huh? Bear with me on this. Yes, Kiran's approach was more effective. How is Kiran's approach more effective? Because Kiran achieved that result with the same effort in lesser time. Kiran says me. Okay, thanks a lot, Himanshu. Right, so that is what Mr. Pathak says we don't, sir, Himanshu Pathak, right? So this is how, what is the difference between efficiency and effectiveness? Now, let's come to the point. On the other side of the coin, both Kiran and Himanshu studied for 4 months, right? Both cleared the exam and Himanshu got more marks than Kiran. Himanshu के marks ज्यादा आए हैं किरण से. तो दोनों ने 4 महीने पढ़ा, अपना अपना एफर्ट लगाया. Efficiency is more or less the same. So whose approach was more effective? Whose results are more effective? Kiran or Mr. Pathak, Himanshu? हिमांशु का दोनों 4 महीने में पढ़े हैं, बट हिमांशु का जो रिजल्ट है वो किरण से अच्छा आया है. बट ऑब्वियस हिमांशु का जो रिजल्ट है, दैट इज हिमांशु का जो एंड रिजल्ट आया, दैट इज मोर इफेक्टिव, दैट इज इफेक्टिव देन किरण's. This is the difference between efficiency and effectiveness. Efficiency is while doing the work, and effectiveness is something which is related with the quality of result. आपने कॉस्टिंग में क्वेश्चंस किए होंगे, लेबर वाले. This machine produces this much product in this much time, this machine produces this much product in this much time, which machine to buy? Labor, person A produces this product in this much time, person B produces this much product in this much time. Who is more efficient? Which machine is more efficient? So that is the difference between efficiency and effectiveness. Efficiency comes first and effectiveness is a result. So that is the difference between efficiency and effectiveness. I hope I'm clear with the difference. Efficiency and effectiveness, you will read about it in your strategic management subject as well, right? Someone asked me, so what is off-the-shelf accounting software? Off-the-shelf accounting software is the standardized software, like the softwares which are available for mass public, available in the market. You just want to purchase Microsoft Windows, your antivirus softwares. There are no specific customizations. Anybody can purchase it and then you can use it. The same for everyone, right? That is off the shelf software. Chaliye, so now what is the relevance of IT in audit? How is IT relevant for our audit? As a chartered accountant, how is IT relevant for me? This is a hot exam question. Do note it. So the questions being asked in ICI exams is, mention some situations in which IT will be relevant to audit. ऐसी कौन सी situations हैं जहां से आपको लगता है that IT की audit में बहुत relevance है, requirement है, जरूरी है? ऐसी कुछ situations हमें बताइए
जिससे हमें लगे भी यस आईटी ऑडिट के अंदर भी रेलेवेंट है, ऑडिटर को भी आईटी की नॉलेज होनी चाहिए, ऑडिटर को भी आईटी के बारे में पता होना चाहिए। तो ऐसे कुछ सिचुएशंस हमें बताइए। सो वंस दिस क्वेश्चन वाज देयर इन 3 marks, once it was in 4 marks, and one it was in 5 marks. So what are those situations? Here are the situations. You have got 8 situations. What are these? Increased use of systems and application software in business. For example, use of ERPs. So you guys understand about what are system software and application software. Application software are system software are the softwares which are the basic softwares required to run your computers, operating systems, right? And application softwares are different, like applications in your yeah, your Android, that is a system software. Apple software, when you upgrade it or update it, that is a system software which provides the ground where you can play with different application software. Basically, so this is a ground, right? Suppose this is water. If you want to drink something like not plain water, you'll use a syrup and mix it with water. So basically it is water, and whatever you mix into it, different substances to make different flavoring drinks, that is application. The system software is a simple ground which is a lifeline of the computer system, which put air into that system. उसकी सांसें उसकी लाइफलाइन है. एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं अपने मोबाइल के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर. हाँ, आप टैली का सॉफ्टवेयर यूज, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, आप कोई गेमिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, आप कोई ट्रेवलिंग ऐप यूज कर रहे हैं, सॉन्ग्स की ऐप यूज कर रहे हैं, दोज आर ऑल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो आई होप सबको ये एग्जांपल क्लियर हो गई दैट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपका बेसिक सॉफ्टवेयर है जिसको आप अपडेट करते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिफरेंट एप्लीकेशंस को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होता है. ठीक है. कई बार आप कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल में, तो वो बोलता है दैट आपका वर्जन कंपेटेबल नहीं है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, आप प्लीज उसे अपडेट कीजिए प्ले स्टोर में जाके आपके, और उसके बाद आप इस एप्लीकेशन को यू कैन रन दिस एप्लीकेशन, यूज दिस एप्लीकेशन. So increased use of system and application softwares. Then we have complexity of transactions has increased. There are multiple systems, network of systems. 90s के टाइम में आप बैंक जाया करते तो सिस्टम्स दिखते ही कहाँ थे, फाइल्स थी, स्टेशनरी, और ऑलमोस्ट बहुत स्टाफ होता था. आज आप बैंक्स में जाइए, स्टाफ कम है, सिस्टम्स ज्यादा है, राइट? So there are multiple systems connected to central server, clouds. There's a network of systems. The auditor needs to understand जिस चीज का वो ऑडिट करने जा रहा है, ऑडिटर को पता होना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए. ये कंप्यूटर कहाँ से कनेक्टेड है, इसके ऊपर कौन लॉग इन कर सकता है, किसके पासवर्ड्स यहाँ पे हैं, कौन किस सिस्टम को ऑथोराइज है यूज करने को. Situation number 3, high tech nature of business. You understand telecom and e-commerce? Okay, give me an example of e-commerce. Give me an example of e-commerce. Good. Right. Amazon. That is an e-commerce. Example. So you have applications installed in your phone. You have different varieties of telecom operators you can choose from. High tech nature of business. All these payments through different kinds of apps and all. High tech nature of business. We have to the law
has had to amend many reports. कई रिपोर्ट्स ऐसी हैं यूपीआई के इंट्रोड्यूस होने के बाद, कई रिपोर्ट्स ऐसी हैं जहां पे उन्हें यूपीआई का प्रोविजन ऐड करना पड़ा है ऑडिट रिपोर्ट्स के अंदर. Whether this transaction was done via UPI, via credit card, via net banking, via NEFT RTGS. And if I take you to the 90s, there were only three options: check, draft, cash. How was this transaction made? Was it through a check? Was it through a draft? Or was it in cash? Simple. Now there are so many options and many reports have got these options. So the auditor has to check how was this transaction done. Volume of transactions are high. We know that insurance, banking, railway ticketing, we know this. If you've booked a ticket through the railway app or any different app, you could know how much volume, see the number of tickets when the Tatkal window opens up. You're sitting at your home, 10 a.m. in the morning, the Tatkal window opens and e-window opens and will be able to book the ticket. Within a span of 3 to 5 minutes, if you're late, even while booking the ticket, your Tatkal can go into wait list. Because a person from anywhere in the world can access that system and book his or her ticket. It is not like a queue at a particular railway station that I'm standing at second number, मेरा तो पक्का है मुझे ticket मिल ही जाएगा. So volume of transactions are really high. Company policies, sometimes there are company policy says you have to comply with these rules and regulations with respect to the use of IT systems. As an auditor, I should be knowing what is the company policy with respect to that. Then there are regulatory requirements like in the Companies Act 2013, Internal Financial Controls IT Act. This has been amended. IT Act 2008 has been amended. Then required by Indian and international standards, like if you have taken these standards, ISO, PSI, DSS, standards on auditing as required by our standards on auditing. We have to comply with these provisions, with the relevance of the knowledge of IT to be used in this environment. And the last is increases efficiency. See here, efficiency first, effectiveness later on. Right? Increases efficiency and effectiveness of audit. So someone says Flipkart, Amazon, right? Zomato, good. eBay. Wow. eBay का नाम बहुत टाइम बाद सुना है. Yes, Myntra, good. Darshan. You can say that, but it's become easier as well now. No, from that day onwards, you would just a huge pile of books and ledgers you would have to check. Now, even in the softwares, you have this audit option available. You can get various kinds of reports. So pros and cons of everything. If the business environment has become more complex, auditor finds it complex, but then he has got tools as well. We'll study in that part of data analytics how this IT, if it is making the work complex for the auditor, how it is also helping the auditor to deal with this complex environment. सोनाली, हमारे स्टैंडर्ड्स हैं. आप जो ये कंपनीज भी स्टैंडर्ड्स लेती हैं, राइट? उनकी रिक्वायरमेंट होती है. और जैसे हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे एस ए 315, अगर आपने पढ़ा है तो वो 315 ऐसे क्या कहता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ये कहता है जो क्लाइंट का बिजनेस एनवायरनमेंट है उसकी नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है. आप जिस चीज के ऊपर काम करने जा रहे हैं, जिसको आप ऑडिट करने जा रहे हैं, अगर उस एनवायरनमेंट के बारे में आपको पता नहीं होगा, आपको उसके ऊपर कौन से लॉज लग रहे हैं, कौन से रूल्स लग रहे हैं, वहां पे काम कैसे हो रहा है, अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आप उसके अंदर कमी कैसे निकालेंगे, अगर कोई होगी तो. कहाँ पे कुछ एरर हो रहा है, कहाँ पे कुछ फ्रॉड हो रहा है, आप कैसे निकाल पाएंगे अगर आप खुद ही अनजान है, उसे यूज कैसे करना.
तो ये हमारा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 315, तो रिक्वायर्ड बाय इंडियन एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एज वेल। जहां पर आईटी यूज हो रहा है वहां पे आईटी के कुछ बेसिक रूल्स उनको फॉलो किया जाए और ऑडिटर भी अपने स्टैंडर्ड्स फॉलो करें। आई होप सोनाली क्लियर। अब सब जो ऑफिसेज में काम करते हैं ना एज एन आर्टिकल, सब अपने अपने उसके साथ आ रहे हैं सॉफ्टवेयर के साथ सब बता रहे हैं हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। दीक्षिता, आईटी की नॉलेज सिचुएशन में, आईटी की नॉलेज, आईटी के ऊपर क्या कंट्रोल्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में यूज हो रही है उसको लेके क्या कंट्रोल्स हैं, उनके ऊपर कैसे काम हो रहा है, क्या उसके अंदर कोई ब्रीच ऑफ कंट्रोल हो रहा है, क्या क्या पॉलिसीज रखी गई हैं, ये सब हमारे लॉज भी बोलते हैं भी आपको इसके बारे में ध्यान रखना है और अपनी रिपोर्ट्स में देना है। द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आर द रिक्वायरमेंट्स सेट अप बाय द रेगुलेटर्स लाइक एमसीए, सेबी, these bodies with respect to the organizations falling under their pursuit. That is what the 6 point says. Okay, great, Sonali. So this is an exam question, relevance of IT in audit, and the answer is in front of your screens. I'll be sharing them after the class. Okay, so now we are done with part one, the general part. Now coming to part two, risks, controls, and testing. Any doubt in part one, please? That was a very general part. What is automated environment? What are its features? Then relevance of IT in audit, then some situations in which you find IT is relevant. So three question, we had three parts in part one, subparts, and that is it. Three questions: automated environment and its features, relevance of IT in audit, and increased use of situations where IT is relevant for audit. किसी को कोई डाउट, कोई शंका कुछ हो तो प्लीज कम फॉरवर्ड विद इट बिफोर वी प्रोसीड टू पार्ट टू, रिस्क कंट्रोल एंड टेस्टिंग. ओके, लेट्स मूव अहेड. किसी ने मुझसे ऑफ द शेल्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पूछा था, समझ आ गया किसने पूछा था? जिसने पूछा था, देयर आर लॉट मोर कमेंट्स, आई कैनॉट फाइंड योर नेम. हूसोएवर आस्क्ड इट, प्लीज आस्क मी अगेन अगर आपको नहीं समझ आया तो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज एन ऑडिटर व्हाट डू आई हैव टू डू? आई हैव टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट. जहां जा रहा हूं, मैं जिस चीज को ऑडिट कर रहा हूं मुझे पता तो हो मैं कर क्या रहा हूं, किसके ऊपर काम कर रहा हूं. नो, चाइनीज खाने का मन है तो मैं इटालियन रेस्टोरेंट में नहीं जा सकता और वहां जाके मैं ऑर्डर नहीं कर सकता. सो आई नीड टू नो मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ, जो मेरा कंटेक्स्ट स्कोप ऑफ वर्क है, मुझे पता हो भी मुझे यहाँ पर काम कैसे करना है, यहाँ पे मेरे पास क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है. ऐसे 315. सो एज एन ऑडिटर he is required to understand the entity and its business. Much required, including IT as per SA 315. Okay, people. So there is a tip for you for your audit exam. Wherever you feel that an essay is becoming operative, standard on auditing, जब हम छोटे बच्चे थे, अंग्रेजी पढ़ा करते थे स्कूल में, इंग्लिश, तो देयर वाज अ लिटरेचर पार्ट एंड देयर वाज अ ग्रामर पार्ट, राइट? Although that is a different thing, paper is in comprehension and notes making, literature, grammar, right? So basically this was to literature part and grammar part. Grammar part was what? Tools, aids. Every language has this: Hindi, English, any regional language, Sanskrit, whatever language is it, it has two basic parts. One is the application of grammar in day to day literature. तो आप ग्रामर के रूल्स पढ़ते थे, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, नाउन, प्रोनाउंस, और उसको अपनी राइटिंग, रीडिंग और
स्पोकन इंग्लिश में यूज करते थे. In the same way, in auditing, the Atma, the soul, is standards on auditing. Almost different, हर different topic के ऊपर you have standards, and then there are guidance notes. Both are issued by the Institute of Chartered Accountants of India. That is their forte. So एक ऑडिटर को स्टैंडर्ड्स का मतलब है क्या, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए, दैट हैज बीन स्टैंडर्डाइज्ड एंड पुट अंडर a standard relating to a specific subject. So standards are mandatory. You have to follow standards. Whenever there is an audit, you have to follow standards, whatever standards are being applied to that particular audit. Guidance notes are, they are recommendatory. That is something which the institute comes out with, what steps you need to follow while applying this standard or applying this audit mechanism. Recommendatory for the members of the institute. So the examination tip which I was going to give you is, wherever you feel while writing your answers, don't go into excess of it or write unwanted essays, but wherever you feel as a rational examinee that in this particular answer, this standard of auditing becomes operative. That particular standard of accounting can be standard on auditing can be mentioned over here because it finds a place, it gets importance over here. Please do so. This is effective professional writing, strong professional writing, and it fetches you good marks. Students usually complain of low marks in audit. Even the toppers get low marks in audit just because of this stuff, that they are writing the answers in generally. They said, so do we have to copy the modules language? Can't we write in our own language? When you write in your own language, it is completely fine, but you make sure that your language is professional language. Modules language, study maths language is professional language. That is why they say, why do we need to write in modules language? That is not modules language, that is professional language. And that is expected of you to write in professional language. So try to inculcate more professionalism in writing your answers. So make sure wherever you get references of essay, do share those references while writing your answers. Like here, while understanding the environment, I know essay 315 becomes operative, so I have to mention it. Understanding the entity and its automated environment involves how IT department is organized in the organization. So general knowledge of the business environment, the work, the business being carried on, it's fine. I've done it as an auditor. But if it is an automated environment, I must understand how the IT department is organized, how the IT activities are carried out, what are the IT dependencies. IT dependence means how much the processes and operations are dependent upon computers and systems. उनसे जो रिजल्ट निकलते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं, उनके ऊपर काम किया जाता है. इतनी डिपेंडेंसी है आईटी के ऊपर इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में. उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिस्क क्या है और उन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, कम से कम करने के लिए, उन रिस्क को हैंडल करने के लिए क्या कंट्रोल्स लगाए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन. So this is what all as an auditor I have to understand. ठीक है? Now comes a question. This is also an exam question. Considerations by the auditor for understanding the automated environment. सर आपने बोल तो दिया अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंड करना है. कैसे करें अंडरस्टैंड? जाके बैठ जाए वहां पर, बताओ जी अंडरस्टैंड, दिखाओ हमें, सिस्टम दिखाओ, ये सब दिखाओ. ऐसे अंडरस्टैंड करेंगे? नहीं. कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे. और वो कौन से ऐसे कंसिडरेशंस है, कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिसके बेसिस पे ऑडिटर अपनी एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करेगा. तो he'll see which information systems are being used. कितने हैं information systems being used, quantity, quality, if they have been given names or they have been designed designated specific roles.
ठीक, what is the purpose of those information systems? For example, what is their purpose? Financial and नॉन फाइनेंशियल. फाइनेंशियल हम सबको पता है. फाइनेंशियल पर्पस, आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, आप ऑडिटिंग कर रहे हैं, आप फाइनेंस का काम कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो फाइनेंशियली है. नॉन फाइनेंशियल के एग्जांपल बताइए जहां पे नॉन फाइनेंशियल काम में सिस्टम्स का यूज हो रहा है. बताइए प्लीज. आप लोग इसमें एक एग्जांपल चाहता हूं, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए और बताइए. एज एन ऑडिटर मैं ऑडिटी का एक एंटिटी का ऑडिट करने गया हूं. ठीक, तो मुझे पता है अभी सिस्टम्स फाइनेंशियल काम के लिए तो यूज होते हैं, रिपोर्ट्स बनती हैं, अकाउंटिंग होती है एंड एवरीथिंग. नॉन फाइनेंशियल की वहां मेरे को कौन सी एग्जांपल दिखेंगे जिसके लिए सिस्टम यूज हो रहा हो सकता है? तो क्या एग्जांपल होगी नॉन फाइनेंशियल की, बताइए मेरे को जरा. एज एन ऑडिटर अगर आप वहां गए हैं तो क्या मिलेगा आपको जिसमें सिस्टम्स नॉन फाइनेंशियली यूज हो रहे हैं? चलिए प्लीज कम ऑन. पीडीएफ रीडर, गेट पास एंट्री, अटेंडेंस. ठीक है, बायोमेट्रिक्स इज गुड एग्जांपल. यस, अटेंडेंस, बायोमेट्रिक्स, गेट पास एंट्री रिलेटेड. सिर्फ दो लोगों ने ही एग्जांपल दिए, बाकी क्या कर रहे हैं? थिंक ऑफ एन एग्जांपल ऑफ नॉन फाइनेंशियल. अब हम क्या करते हैं, हमने पढ़ लिया कंसिडरेशंस बाय द ऑडिटर, लिख लिया. देयर पर्पस लिख के आ गए, दैट इज इट. आंसर में साथ में लिखा नहीं फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, क्योंकि वो याद नहीं था. हमें तो फाइनेंशियली पता है, नॉन फाइनेंशियल हमने कभी सोचा ही नहीं. जब पढ़ रहे थे तब पढ़ लिया फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल. याद रहा होगा तो लिख देंगे, नहीं हमने थोड़ा ना उस टाइम दिमाग लगाया भी नॉन फाइनेंशियल कैसे हो सकता है. अरे एक सिंपल सी एग्जांपल, बायोमेट्रिक्स इज अ गुड एग्जांपल. मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ तुम्हें. यूज ऑफ सिस्टम्स. एज एन ऑडिटर मैं गया हूँ, मैंने कहा मुझे आपके कंट्रोल्स चेक करने हैं, हाउ इफेक्टिव आर द कंट्रोल्स. हाँ सर ठीक है, कीजिए कंट्रोल्स चेक कीजिए, देखिए लेके जाइए इन्हें, कंट्रोल्स चेक कराइए ऑडिटर सर को. मैं गया, मैं देखा सिस्टम्स हैं. सबसे पहले मैंने कहा, मेरे को आपके सीसीटीवी चेक करवा दीजिए, कितने सीसीटीवी काम कर रहे हैं, सीसीटीवी का बैकअप आप कहाँ पे लेते हैं, जिस सिस्टम पे आपके बाकी सब काम हो रहे हैं क्या उसी सिस्टम पे बैकअप ले रहे हैं, या देयर इज अ डिफरेंट सेपरेट आईटी मैकेनिज्म फॉर टेकिंग द बैकअप ऑफ सीसीटीवी. अगर कल को ऑर्गेनाइजेशन में कुछ फ्रॉड होता है, कुछ चोरी होती है, कुछ होता है, राइट, आग लगती है, कुछ भी है, कोई भी रीजन है, कोई भी थ्रेट आता है, तो सीसीटीवी इज द बेस्ट प्रूफ अवेलेबल एज एन एविडेंस. तो उसको आप रिट्रीव कैसे करेंगे, उसके बैकअप को कहाँ स्टोर कर रहे हैं, क्या इंतजाम किए हैं उसके लिए? दैट इज नॉन फाइनेंशियल. तो फाइनेंशियल कुछ नहीं हो रहा, कंट्रोल्स के लिए यूज किया जा रहा है सिस्टम्स को, कंट्रोल्स चेक करने के लिए. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन फाइनेंशियल अलोंग विद बायोमेट्रिक्स. तुम लोग सब सॉफ्टवेयर बता रहे हो मेरे को. थिंक ऑफ नॉन फाइनेंशियल पर्पस. सो मैं देखूंगा, मेरी कंसिडरेशन है, आपने इतने इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का पर्पस क्या है? सर इतने देखिए, ये सिस्टम हमारा, ये सर्वर है, ये सिस्टम हमारे काम के लिए यूज होते हैं. देखिए सर ये सिस्टम जो है ना, ये हमारी जो बायोमेट्रिक्स है उससे रिलेटेड है. और ये सिस्टम जो आप देख रहे हैं सेकंड फ्लोर के ऊपर आपके पास नोट किया हुआ है, ये सिस्टम हमारी सारी सीसीटीवी फुटेज स्टोर करने के लिए. आई कुड कैटेगराइज these systems are used being for financial purpose and those for non-financial purpose. ठीक है. नाउ लोकेशन ऑफ आईटी सिस्टम्स, लोकल वर्सेस ग्लोबल. सो वेयर आर द आईटी सिस्टम्स लोकेटेड? हमारे सिस्टम्स का जितना काम हो रहा है नेटवर्किंग यही है, या सिटी देश से बाहर भी कहीं सिस्टम्स इंटीग्रेटेड है? आगे आप पढ़ेंगे क्लाउड.
आपके सिस्टम्स पड़े कहाँ हैं? आप देखिए कभी, अगर आपने यूट्यूब पे देखा हो गूगल का ऑफिस, आप कभी देखिएगा, आज देखिएगा यूट्यूब पे गूगल का ऑफिस, और आप देखेंगे कितना बड़ा सिस्टम्स वहां पड़े हैं जो इतनी इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर किए हुए हैं। कोई अलग ग्रह पे नहीं गूगल ने ऑफिस बनाया, यहीं पे धरती पे बनाया है, इंडिया अपना अर्थ पे। और इतना बड़ा ऑफिस है और इतनी इंफॉर्मेशन है, इतनी मशीन्स हैं। आप एक यूनिक चीज देखेंगे वहां पे, उसकी मशीन्स जो उसके कंप्यूटर सिस्टम्स है ना, उसके आसपास उन्होंने वाटर पाइप्स के इनलेट्स और आउटलेट्स बनाए हैं। जस्ट मशीन जितनी हीट जनरेट करती हैं उन मशीन्स को कूल डाउन करने के लिए। अगर आपने कभी न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर पढ़ा हो, ऐसे होते हैं वैसे। तो आपके आईटी सिस्टम्स की लोकेशन कहाँ है, कैसे कनेक्टेड है वो, आर्किटेक्चर क्या है आपके कंप्यूटर सिस्टम्स का जो आप रख रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। डेस्कटॉप बेस्ड इज योर normal PC, CPU, that is a desktop based computer. Client server, web application, cloud based. So what is cloud? Web application is what you are logging into a website and you are working over there. Dashboards kind of thing. Client server architecture is there is one server in the organization that is placed on the top floor. Only some people have authority to access that particular floor. जहां पर सर्वर पड़ा है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, उस सर्वर के साथ सभी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो जो सब कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं वो क्लाइंट्स हैं। हम आगे पढ़ेंगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कैसा होता है। और एक बड़ा कंप्यूटर है जो सर्वर है, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, उससे इंफॉर्मेशन ली जाती है और उसके ऊपर काम किया जाता है। ठीक, इट इज लाइक देयर इज अ बिग बकेट ऑफ मिल्क, एक से बटर मिल्क बनाया जा रहा है, एक से बटर बनाया जा रहा है, एक से कर्ड बनाया जा रहा है, एक से मिल्क शेक बनाया जा रहा है, एक से चीज बनाया जा रहा है। दैट इज द सेम थिंग। सो द सोर्स इज सेम, द सोर्स इज सर्वर, and different clients are using it for different operations, the same information which is stored in the server. Cloud based, you have learned your you know drives, Google Drive, Dropboxes. These are all cloud based architectures where you rent a space or available as to you for, till a certain limit free of cost, where you can work real life time. आप सिस्टम पे एक एक्सेल फाइल पे काम कर रहे हैं, सडनली द सिस्टम गेट्स शट ऑफ, आपकी फाइल हम क्या कहते हैं, उड़ गई, इट गॉट करप्टेड, डिलीटेड, वी कुड नॉट सेव द फाइल इन टाइम। बट जब आप क्लाउड पे काम कर रहे हैं, ये बात कर रहा था मैं डेस्कटॉप बेस्ड सर्वर की, जब आप क्लाउड पे काम कर रहे हैं, क्लाउड पे रियल टाइम वर्किंग होती है। आप एक एक्सेल फाइल वन ड्राइव पे काम कर रहे हैं, आप वन ड्राइव पे काम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के, और आप रियल टाइम में उसके ऊपर काम कर रहे थे, आपका सिस्टम बंद हो गया, देयर वाज अ पावर फेल और समथिंग एल्स, आपका काम रिटेन्ड है, सेव्ड है, बिकॉज आप क्लाउड पे काम कर रहे थे। पावर यहां गई है, वहां नहीं गई, काम वहां पे हो रहा था, आप सिर्फ उसे अपने पास एज अ कॉपी सेव करते हैं। दैट इज क्लाउड बेस्ड वर्क। वर्जन, वी ऑल नो वर्जन, आपके जो मोबाइल के अंदर सिस्टम्स के वर्जन होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के वर्जन आते हैं, एंड्रॉइड के, नो, एप्पल के जो वर्जन होते हैं सॉफ्टवेयर के। सो ये वर्जन डिफर करते रहते हैं और हमें अपडेट करने पड़ते हैं। इंटरफेसेस विद इन सिस्टम्स, so what is, in case there are multiple systems, which system is connected to other system, whether they have a common interface, a common place where both the systems can access, that is the interfaces with the systems. How do two systems interact with each other? Now the softwares are in-house, the systems are in-house versus packaged. So sometimes what does it happen, research, some companies which go into the field of research as well, what do they do? uh, if you've done FM or capital budgeting, what do? Whether should we purchase this machine from the market or we should get this developed within our company? What is in-house?
इन हाउसेज मम्मी ने घर पे ही दूध से पनीर बना लिया, बटर बना लिया, कर्ड बना लिया, दैट इज इन हाउस। हमें जितनी रिक्वायरमेंट थी अपने अपने घर के अंदर ही पूरी कर ली, कंपनी ने अपने घर के अंदर ही वो सॉफ्टवेयर बनवा लिया बाय फॉर्मिंग अ सेपरेट आईटी टीम, रिक्रूटिंग आईटी पीपल। हमें ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, हमें ऐसा सिस्टम चाहिए, हमें ऐसा क्लाउड एप्लीकेशन चाहिए, आप यहीं पे बना दीजिए हमारे लिए, स्पेसिफिक टू आवर कंपनी, दैट इज इन हाउस वर्सेस पैकेज्ड। हमने कहा नहीं मम्मी घर पे मत बनाइए, बाजार से जाकर पनीर ले आए, दही ले आए, बटर ले आए, पैकेज बाहर से जाकर ले आए, ऐसे ही बाहर से हमने सिस्टम ले लिया, बाहर से हमने सॉफ्टवेयर ले लिए, परचेज कर लिया, दैट इज पैकेज। तो मेरे को ये भी चेक करना है एज एन ऑडिटर, इनका सिस्टम खुद का बनाया हुआ है या पैकेज, बिकॉज पैकेज सॉफ्टवेयर होगा, बाहर वाला पब्लिक सॉफ्टवेयर होगा जो बाहर जनरल पब्लिक यूज कर रही है, तो और मेरे को पता होगा उसके ऑपरेशन, मुझे उसके सिस्टम्स के बारे में पता होगा, आई वुड नो अबाउट इट्स कमांड्स and what are its facilities. But if it is an in-house software or in-house system built by the company within its premises, I'll need to devote more time to understand how it has been built to cater to the company's specific requirements. Now, what are the outsourced activities? Whether I have a team within, whether the company has a team within its organization which takes care of the maintenance of IT systems, or they have outsourced it to a third party, ABC and Consultants Private Limited, ABC and Consultants Company, who have entered into an AMC, annual management contract with the maintenance contract with the company. That quarterly we will come at every quarter end, and we'll check all your systems of viruses and any repairs required or something. And meanwhile, if there is any sort of help you require from us, you can contact us, you can call us. We'll provide you maintenance support services. So if there are any outsourced activities. Now in the IT department, who are the key persons? So we have CIO, CISO administrators who administer the IT systems, Chief Information Officer, Chief Information Security Officer. These are very two important persons and they're different. Chief Information Officer, a person who has every kind of information. Information Security Officer, who has to take care of the security of the information. Whatever information is stored with the organization, it is secure and safe. So the scope of CIO is wider than CISO. So this is also an example of questions or situations where the auditor needs to understand the automated environment. Okay. Documentation. The understanding of a company's IT environment is obtained should be documented as a 230 becomes operative. Using any standard format or template, having a summarized document helps the auditor in determining the areas considered in scope of audit. So whatever the auditor has understood, first part was auditor has to know that he has to understand the environment. Second is, how does he need to understand the environment? What should he do? Third is, whatever he has understood, he needs to document it. आपको पता है आपको ऑडिट पढ़ना है, आपने ऑडिट पढ़ा, आपने उसको डॉक्यूमेंट किया, आपने नोट्स बनाए. फोर्थ इज, अब रिस्क आप चेक करेंगे, जितना भी मैंने इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझा है उसके अंदर क्या रिस्क हो सकते हैं जो मुझे ध्यान में रखने हैं. जितना भी मैंने ऑडिट के बारे में पढ़ा है एज एन एग्जाम, अब मैंने एज ए सब्जेक्ट पढ़ लिया, अब एज एन एग्जाम ऑडिट एग्जाम क्या रिस्क है, मुझे भूल जल्दी जाता है, तो मुझे उसके ऊपर काम करना है, दैट इज अ रिस्क. मुझे याद तो रहता है पर मैं अच्छे से आंसर लिख नहीं पाता, प्रेजेंट नहीं कर पाता, दैट इज अ रिस्क. सिमिलरली यहाँ पे ऑडिटर ने एनवायरमेंट समझ ली क्लाइंट की, अपने स्टेप्स भी ले ली उसको समझने के लिए उसे क्या करना था, अब उसे डॉक्यूमेंट भी कर लिया. अब वो इस सब के बाद अब आएगा क्या रिस्क हो सकते हैं जो मुझे ध्यान में रखने ऑडिट करते हुए भी, हाँ ये रिस्क हो सकता है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा और मुझे वो पॉइंट आउट करना है अपने ऑडिट के अंदर. So having obtained an understanding of the IT systems and the automated environment of a company, the audit should now understand the risk
that arise from the use of IT systems. क्या रिस्क हो सकते हैं? Again, this is an examination question. So, what is it? Inaccurate processing of data or processing inaccurate data or both. So, you have provided right data to the machine, the computer system, but there is a problem with the machine code, the software, and it is giving me inaccurate results. Or the machine is okay, the code is okay, but as a human error, I have given inaccurate data. I have fed inaccurate data मैंने पंच कर दिया मशीन के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर. वो उसकी प्रोसेसिंग नॉर्मल ही है, वो अपनी प्रोसेसिंग सही कर रहे हैं सिस्टम, पर मेरी तरफ से डेटा गलत दे दिया गया. ये भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं. ठीक. अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू डेटा, ये पर्टिकुलर डेटा कॉन्फिडेंशियल है. दिस डेटा इज कॉन्फिडेंशियल. Only CIO and CISO should have access to this particular data, but anybody in the company is free to access this particular data. So that is, as per the company policy, only 2 to 3 persons have been given special access to this particular data. Whatever sensitive data is there with the company, the previous financial results or the upcoming projects, budgets related to that. So nobody except for those 2 people can access that data. So there is a risk that unwanted or unauthorized people may have access to that particular data. And as an auditor, I have to check. For example, how will I check this? I'll go to person A. Person A is not authorized to log into person B's account. Person B is a superior person. So I ask for, like, I want this from person B. So his answer should be, sir, person B is not available. अभी जब वो अवेलेबल होंगे तो हम आपको उनका उनके सिस्टम से उनको बोल देंगे, वो ये पर्टिकुलर फाइल आपको दे देंगे. अब व्हाट डज पर्सन ए डू? सर कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ. ही गोज इनटू पर्सन बीज कैबिन और उनके कंप्यूटर के पास उनका जो कीबोर्ड का ड्रॉर है और जो उनका ड्रॉर है उसको खोला और उसके अंदर आईडी और पासवर्ड लिखा हुआ. पर्सन ए ने आईडी डाली, पासवर्ड डाला, लॉग इन किया, वो फाइल निकाल के मुझे दे दी. अनऑथराइज्ड एक्सेस मैंने नोट कर लिया. तो भाई साहब, पर्सन ए को एक्सेस ही नहीं है पर्सन बी का. लोअर इन हायरार्की पर्सन बी का एक्सेस पर्सन बी को ही है, तो पर्सन ए ने कैसे ये कर लिया? देयर इज अ रिस्क, द कंट्रोल्स आर वीक. हाउ कम ही इज राइटिंग इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड पेस्टिंग इट इन हिज ड्रॉर? और जो सबको पता है ऑफिस को, कोई भी आके उसे सिस्टम के साथ छेड़खानी कर सकता है. Anybody can use this system for wrongdoings. So unauthorized access to data, direct data changes, backend changes. Similarly, पर्सन बी का जो सिस्टम था उसके ऊपर डेटा जो है वो मेंटेन हो रहा था, कुछ भी चेंज करना है वो वहां पे करते थे. फॉर एग्जाम्पल, पर्सन बी इज द HR person, and what can he do? He had to come out with a circular that the next 2 days are off. The next 2 days are off. Everybody is being sanctioned leave, छुट्टी. बट जो पर्सन ही है वो अपने सिस्टम से बैठे बैठे पर्सन बी के कंप्यूटर में वो चेंजेस कर देता है उस फाइल में. 2 की बजाय वो 20 कर देता है. He replaces the word 2 by 20. What is this? This is a direct backend changes, direct data changes. अगर बैकएंड का आपके पास एक्सेस है किसी तरीके से, या बैकएंड पे आप चेंजेस कर सकते हैं, तो बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास मेन डेटा को चेंज करने का एक्सेस होता है. बैकएंड पे जो वर्क हो रहा है, विच इज नॉट विजिबल, विच इज बीइंग मेंटेन्ड एट बैकएंड. देयर आर स्पेसिफिक job recruitment for back-end people in companies. There are specific bank offices. You go to bank branches, these are retail operations. There are specific bank offices where the back-end operations are carried out. They don't deal with the general public. They carry out the back-end operations. I suppose 3 Idiots movie सबने देखी है, एंड उसमें वो स्पीच, द ग्लोरियस स्पीच, वो कैसे चेंज हुई थी. दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑल दिस.
See the risk: inaccurate processing of data, unauthorized access, direct data changes, the most important. Backend change, the speech was changed. So you can relate it to that example of the speech from 3 Idiots, how it was changed, the speech of Chatur. Now, as an auditor, I have to check who has got excessive access, privilege access, super users. Person B has allowed person A to use his computer. He has been given excessive access, privileged access. As per his designation, job, he is not allowed that access, but he is being given that access. That is privileged access or super users. So I have to check for that as well. Lack of adequate segregation of duty. Do you understand the maker and checker concept? A person who makes a transaction, the other person checks it. You go to a bank and you give them a check for encashing. A person who makes the check or who makes the particular voucher, the other person signs it, checks it clearly, whether everything is in place or not. But if there is lack of adequate segregation, segregation means काम responsibilities बांटी नहीं गई हैं as per the level of post, as per the level of authority. एक ही इंसान हर तरह का काम कर रहा है, अपने सिस्टम पे बैठा फॉर्म भर दिया, दूसरे सिस्टम पे गया, किसी और पर्सन ने उसे चेक करके अप्रूव करना था, उन्होंने अपने आप ही अप्रूव कर दिया. That is lack of adequate segregation of duties. Unauthorized changes to systems or program. When you are not authorized, when you have unauthorized access to data, you can make unauthorized changes to systems or programs. Failure to make necessary changes to systems or programs. Suppose your software demanded an update, but you are unable to update your software throughout the office. This is a failure. You're not able to make necessary changes to your systems or programs. That is a failure. That is also a risk. Loss of data. If you don't maintain proper backups, you don't have a backup program in force, your data can be lost, and there are no mechanism available to retrieve that data. This is a risk, a bigger risk. So as an auditor, I have to, after understanding the environment, now I have to understand the risk associated with the automated environment. Only then I'll be able to run my thoughts, brainstorm what could be the breaches. See, so we have understand the risks. Yes, Darshan, there will be definitely, even though our ERP systems are used, who are using these systems? The employees. Dikshita, usually package systems are package softwares are used more or less. There are specific organizations which get their requirements inbuilt. Ayush is very happy, Mr. Ayush Dwivedi, with the mention of Chatur's speech. Okay, so it's 7:25. We'll spend 5 minutes on this topic and then we'll take a break before moving on to our next topic. Okay. So what have I done? I have understood the risk. I have taken my steps to understand the environment. Sorry, risk, no, environment. Then I documented what I've understood about the automated environment. Now, when I understood the risk, I should understand, I should make a note. These risks, if not mitigated, how are they going to impact my audit? अगर इन risks को कंपनी ने, क्लाइंट ने कंट्रोल्स के साथ मिटिगेट नहीं किया हुआ, उन्हें रिस्क नहीं पता, उन्हें कंट्रोल्स नहीं पता, कंट्रोल्स हैं पर वीकर कंट्रोल्स हैं, कुछ भी उन्होंने ऐसा किया हुआ है जिस वजह से रिस्क मिटिगेट नहीं हो रहा है. मिटिगेट मींस कम से कम लेवल पे रिस्क को लेके आना, तो उसका मेरे ऑडिट पे क्या इंपैक्ट होगा.
ऑडिट पे क्या इम्पैक्ट होगा? तो इम्पैक्ट ऑन सब्सटेंशिव ऑडिट, इम्पैक्ट ऑन कंट्रोल्स, इम्पैक्ट ऑन रिपोर्टिंग। तीन तरह से इम्पैक्ट आएगा। मेरे ऑडिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, कंट्रोल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, और रिपोर्टिंग के ऊपर क्या है। सबसे पहले हम कंट्रोल्स के ऊपर देखते हैं। कंट्रोल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? तो जब मैं कंट्रोल्स चेक करूंगा एज एन ऑडिटर, आई कैन नॉट रिलाई ऑन ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, सिस्टम कैलकुलेशंस, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स बिल्ट इनटू एप्लीकेशंस। मैं कहूंगा आपके आईटी सिस्टम्स इतने रिस्की हैं, मुझे क्या पता जो रिपोर्ट मेरे सामने सॉफ्टवेयर से निकल के आ रही है वो सब कुछ सही है या नहीं है। कंप्यूटर सही काम कर रहा है, पर आपके रिस्क कितने हैं? हो सकता है अनऑथराइज्ड एक्सेस है आपके कंप्यूटर को, किसी ने छेड़छाड़ कर दी है डेटा के साथ, और जो मेरे पास रिजल्ट निकल के आ रहा है ये प्रॉपर नहीं है। बिकॉज ये मैं क्यों कहूंगा, आपके कंट्रोल्स वीक है। आपके सिस्टम को कोई भी एक्सेस कर रहा है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट सिस्टम, कोई भी एक्सेस कर रहा है, कुछ भी वर्किंग कर रहा है, तो आपके कंट्रोल्स वीक है। इस वजह से मैं बिलीव नहीं कर पाऊंगा, रिलाई नहीं कर पाऊंगा जो इन्फॉर्मेशन मेरे को सिस्टम की तरफ से आ रही है। मैं रिलाई नहीं कर पाऊंगा आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल्स के ऊपर। आपके कुछ कंट्रोल्स जो आपको सिस्टम बोलता है, हाँ जी ये रिपोर्ट इस दिन जनरेट कीजिए, ये रिपोर्ट इस डेट को जनरेट कीजिए, इस रिपोर्ट में ये रिजल्ट यूज कीजिए। मेरे कुछ मैनुअल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है। सिस्टम मेरे को जो कहेगा एज एन ह्यूमन बीइंग मैंने वो करना है। अगर मेरे सिस्टम में रिस्क होगा, गड़बड़ी होगी, तो ऑब्वियसली जब एज ए ह्यूमन में सिस्टम की डायरेक्शंस को फॉलो कर रहा हूं तो मैं भी गड़बड़ कर दूंगा, तो मैं उसके ऊपर भी रिलाई नहीं कर सकता। सिस्टम डेटा एंड रिपोर्ट्स शुड बी टेस्टेड सब्सटेंशिवली फॉर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। रीजन के साथ उसको टेस्ट करूंगा मैं अपने ऑडिट प्रोसीजर्स के बेसिस पे, दैट ये जो रिपोर्ट है 2+2=4, क्या आपका सिस्टम वही दे रहा है? दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, मैं वो देखूंगा। अगर आपका सिस्टम वही दे रहा है तो मैं आपके सिस्टम को थोड़ा बहुत मान लूंगा, कंट्रोल्स ठीक है। अगर आपको सिस्टम को दे ही नहीं, 2+2=5 बता रहा है, मैं कैसे रिलाई कर लूं आपके स्टेटमेंट पे? सो मोर सब्सटेंशिव ऑडिट वर्क इज नीडेड। सब्सटेंशिव इज लॉजिकल, मेरे को अपने और ऑडिट टूल्स यूटिलाइज करने पड़ेंगे जो आप पढ़ेंगे आगे, ऑडिट सैम्पलिंग, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। मुझे और ज्यादा से ज्यादा इन टूल्स का यूज करना पड़ेगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और अच्छे से चेक करना होगा, बिकॉज कंट्रोल्स में गड़बड़ है। अब मेरे ऑडिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका? मैं डेटा के ऊपर रिलाई नहीं कर सकता। सेम सिस्टम डेटा एंड रिपोर्ट should be tested substantially for completeness and accuracy. More audit evidence is required because controls weak है। मेरे को प्रूव भी तो करना होगा, तो मेरे को ऑडिट एविडेंस चाहिए प्रूव करने के लिए भी। कंट्रोल्स वीक है और ज्यादा से ज्यादा मुझे काम करना पड़ा, मेरे को ऑडिट के अपने प्रोसीजर्स अलग अलग यूटिलाइज करने पड़े, और उस वजह से ज्यादा ऑडिट एविडेंस मुझे रिक्वायर्ड होगा। सिमिलरली मेरी रिपोर्टिंग पे क्या इफेक्ट आएगा? बिकॉज कंट्रोल्स वीक थे, रिस्क मिटिगेटेड नहीं था, मेरे को ऑडिट भी बहुत ज्यादा करना पड़ा, और मैं कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके ऊपर सिस्टम रिपोर्ट के ऊपर रिलाई नहीं कर सकता था। तो मैं दोज चार्ज विद गवर्नेंस उनके साथ कम्युनिकेट करूंगा और अपनी ऑडिट रिपोर्ट को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करूंगा। आप लोग ये पढ़ेंगे चैप्टर 11 में, ऐसे 700 701 ऑडिटर्स की रिपोर्ट की कितनी तरह की ऑडिटर्स रिपोर्ट होती है, मॉडिफाइड रिपोर्ट क्या होती है, एडवर्स क्या होती है, क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्या होता है, ये आप उसमें पढ़ें। तो मेरी रिपोर्ट के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा मेरे को ये देखना। तो 3 इम्पैक्ट्स हैं आईटी से रिलेटेड रिस्क को लेके। 3 तरह के इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑन कंट्रोल्स, इम्पैक्ट ऑन माई ऑडिट एंड इम्पैक्ट ऑन माई ऑडिट रिपोर्टिंग। ये 3 इम्पैक्ट्स मुझे बताने हैं। एंड अगेन एन एग्जाम क्वेश्चन, हाउ कैन यू एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क और some risks in the IT environment, if not mitigated, may impact the audit. Please explain or elaborate on this statement. So you have to write these 3 basic points to that question. अरे केशव, मैं हिंदी यूज कर रहा हूँ भाई। आई डोंट नो तुम्हें कब लगा मैं हिंदी का यूज नहीं की। आई एम यूजिंग अ मिक्स। Muhammad Islam, I am not able to understand what are you even asking me. I'm not able to help remembering ki I told you this is a concept
All the faculties will be taking upon this. How do you need to remember the answers? Whenever such a point comes, I'll tell you on my own. I cannot tell it right away in the middle of a chapter. How do you remember the answers? Sorry. Suraj, is substantive audit clear what it is? Yeah, Keshav, I'll take care of that now. इसे सर मजा आया हिंदी में. Okay, before we move on to the next part, we'll take a break. Any doubts till now? Or if you have any doubts, we can take them after break as well. Just put it in the query session and I'll take them up after the break, right? So it's 7:32. Let's take a 15 minutes break and we'll be here by 7:47. Okay?
Okay, we are back after that short tree break. Are you all back with me over here? We have participants from all over India over here. कैसा मौसम है तुम्हारे वहाँ? So 2 minutes, please, till everyone is back. Please respond with a yes or a present or a back if you are here with me. Himanshu, you were already here. You never went for the tea break. Okay. So हमने रिस्क तक पढ़ लिया, अब हम कंट्रोल्स पे आ रहे हैं. We understood about risks. Now we are getting to controls. What are the types of IT controls do organizations need to implement in their environment to mitigate these risks? So what are the kind of IT controls I would be expecting as an auditor that the organization has put in place? Yes, Darshan, I am. Okay. To mitigate the risks and maintain the confidentiality, integrity, availability, and security. I called it CIAS. Not Maruti CIAS, CIAS, audit CIAS. Confidentiality, integrity, availability, and security of data. Companies implement IT controls. Why do companies implement IT controls? To mitigate the risks in IT and maintain the confidentiality, integrity, availability, and security. What is confidentiality? So data should be accessed by authorized people only. It is highly confidential. It should not go in anyone's hand. That is confidentiality. What is integrity? Integrity is data in its original form. It has not been tampered with. If you order something from Zomato, ना वो Zomato वाली टेप लगाकर भेजते हैं ना, ताकि ओरिजिनल फॉर्म में एज इट इज जैसा पैक हुआ वैसा आपके पास पहुंचे, रास्ते में खाने के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो. दैट इज इंटीग्रिटी. डेटा ट्रेवल करता है, डेटा स्टोर होता है, डेटा को रिट्रीव किया जाता है, सो इसकी ओरिजिनल फॉर्म डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, कोई छेड़छाड़ डेटा के साथ नहीं होनी चाहिए. दैट इज इंटीग्रिटी. अवेलेबिलिटी, जिस इंसान को जब वो डेटा चाहिए उसके लिए वो डेटा अवेलेबल है. ऐसा ना हो उसके ऊपर पासवर्ड लगा हुआ है और पासवर्ड किसी को याद नहीं है, जिसको याद है वो पासवर्ड दे ही नहीं रहा है, तो ऑडिटर कैसे चेक करेगा उस डेटा को? तो डेटा की जब अवेलेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, जो ऑथोराइज्ड है उसके लिए अवेलेबल होना चाहिए. एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा, गुम गया, करप्ट हो गया, डिलीट हो गया, ये सब रिस्क हैं उसके साथ. तो इन सब रिस्क को कंट्रोल करने के लिए और इन डेटा के इन फीचर्स को, व्हाट आर द फीचर्स? डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा की इंटीग्रिटी, डेटा की अवेलेबिलिटी एंड डेटा की सिक्योरिटी, द सीएस ऑफ डेटा. So where is Darshan? Darshan, I'll come to that question. You need not repeat that question time and again. I've taken up that question.
I'll come to that question. Okay, where is that guy? Muhammad Aslam. You were asking me, remembering, see, how do you remember the parts? See, confidentiality, integrity, availability, and security. I've coined the term CRs for myself. So whenever I have to remember this, I would like, what was it? Confidentiality, security, and all. If I have remembered CRs, memorized it will pop up in my brain. And in the exam, I don't have to write CRs. It is not a term. It is just to learn the features of data security. So I'll write to maintain the confidentiality, integrity, availability, and security. This is the way, keys to remember the data. Mohammed, if you are there, so this is a step. So what are the kind of controls we have? We have the general IT controls. What are the general IT controls? General IT controls means normal controls, right? General IT controls means normal controls applicable throughout the organization on systems. General IT controls are policies and procedures that relate to many applications and support the effective functioning of application controls. They apply to mainframe, miniframe, and end user environments. We'll do this in our next lecture. The mainframe, miniframe, and end user computers. What are these kind of computers, right? They maintain the integrity of information and security of data. These controls are generally implemented to mitigate the IT specific risks and applied commonly across multiple IT systems, applications, and business processes. Hence, general IT controls are known as pervasive controls or indirect controls. General IT controls are pervasive controls or indirect controls. What is that? One kind of controls for the whole systems, like your antivirus. That is a general IT control. The password to enter your system. When you switch on the system, it asks for the admin password. That is a general IT control to give access to the system. And it's completely fine, Darshan. Okay, it's fine. So that is general IT controls. So these are known as pervasive controls or indirect controls. Indirectly, you could have direct controls. For example, to log into my Gmail, I'll have to enter a password. Whosoever access this system, my email ID is stored in the system. But to enter into my email, they'll need a password which is with me. That is a application control. So enter into an application, you can have a different password. But someone can enter into the system with a general password. So these controls, pervasive means everywhere. In the organization, there is an entry gate and there is a server room. So once a person enters in through the entry gate with biometrics, that is a general control. Has access to everything in the organization. But server room has a specific control. It needs proper authorization. Two people would be required, one's retina scan and one's biometric fingerprint scan. Then only the two people will be able, and any other with them will be able to enter the server room. That is a direct control. Yes, Darshan. Yes. Now coming to application controls. Application controls include both automated or manual controls that operate at a business process level. What is the business process level? I'm processing some work. मुझे एक्सेल चलाना है, मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाना है, मुझे सॉफ्टवेयर चलाना है. मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे एक यूजर आईडी और पासवर्ड दिया है. उसके थ्रू जिस जिस काम के लिए मैं ऑथराइज्ड मैं वो कर सकता हूँ.
आप देखते हैं, आप जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसके अंदर एक एडमिन का पासवर्ड होता है, एक अलग से पासवर्ड होता है जिसके थ्रू आप उसके जो फीचर्स है उसको चेंज कर सकते हैं। हर कोई नहीं कर पाएगा। इफ यू हैव दैट एडमिन कंट्रोल तो आप उसके जो फीचर्स हैं वो चेंज कर पाएंगे, अलग अलग फैसिलिटीज, अलग अलग एप्लीकेशन पे। Automated application controls are embedded into IT applications, ERPs, and help in ensuring completeness, accuracy, and integrity of data. Examples of automated applications include edit checks, validation of input data, sequence number checks, user limit checks, reasonableness checks, mandatory data fields. आप देखेंगे, आप लिंक्डइन पे कोई पोस्ट करने लगते हैं, इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी डालने लगते हैं, इंस्टाग्राम पे रील डाल रहे हैं, स्टोरी डाल रहे हैं, वो 1 मिनट से ज्यादा, 1.5 मिनट से ज्यादा की नहीं डलती है, अपने आप कट हो जाती है। पोस्ट के अंदर एक लिमिट होती है वर्ड्स की। लिंक्डइन पे आप कोई पोस्ट डाल रहे हैं, उसकी एक लिमिट है वर्ड्स की, ठीक। यूजर लिमिट चेक्स, मैंडेटरी डेटा फील्ड्स। आप एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं, जहां पे रेड एस्टेरिस्क होती है, दैट मींस वो मैंडेटरी डेटा फील्ड है, वो ऑप्शनल नहीं है। आप जब तक वो फिल नहीं करेंगे आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल। व्हाट इज अ जनरल कंट्रोल? मैंने सिस्टम ऑन किया, मैं वेबसाइट पे गया, सिस्टम को ऑन करने के लिए मेरे से एडमिन पासवर्ड मांगा गया, मैंने एडमिन पासवर्ड दिया, मैं सिस्टम के अंदर आ गया। अब मैंने एग्जाम वेबसाइट ओपन की, वहां पे मैंने लॉग इन किया, दैट इज एन एप्लीकेशन कंट्रोल। मेरा आईडी, मेरा पासवर्ड एग्जाम वेबसाइट का मेरे पास है, दैट इज एन एप्लीकेशन कंट्रोल। उसके बाद जो फॉर्म आ रहा है उसके अंदर मैं फॉर्म भर रहा हूँ, अगेन फॉर्म का एप्लीकेशन कंट्रोल है। जब तक मैं रेड एस्टेरिस्क वाले पार्ट्स भर नहीं देता तब तक फॉर्म आगे मूव नहीं करेगा। मैंडेटरी डेटा फील्ड, चेक्स एंड वैलिडेशन ऑफ इनपुट डेटा। वहां पे वो आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है इन डेट, डेट, मंथ, मंथ, ईयर, ईयर फॉर्मेट, और आपने अपनी डेट, बर्थ डेट दे दी है मंथ, मंथ, डेट, डेट, ईयर, ईयर फॉर्मेट में। जब आप फॉर्म पे सबमिट क्लिक करेंगे वो वैलिडेट करेगा आपके फॉर्म को, and it will come up with an error, and it will show it in red. This particular box has an error, that is edit checks and validation of input data. So these are all kinds of application controls. There is a column in the software where you have to enter figures, but you have started writing words, it will not accept it. That is an application control. General IT controls are needed to support the functioning of application controls. I told you, general controls are the ground, system software. Application controls are applied on application software. जब तक हम जनरल आईटी कंट्रोल्स यूज करते हो सिस्टम के अंदर नहीं देंगे, हम एप्लीकेशंस को रन कैसे कर पाएंगे? तो जनरल आईटी कंट्रोल्स आर नीडेड टू सपोर्ट द फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल्स, एंड बोथ आर नीडेड to ensure complete and accurate information processing through IT systems. Right? Now, the last kind of controls, IT dependent controls. Controls which are dependent upon IT. Manual controls. So these are basically manual controls that make use of some form of data or information or report produced from the IT systems and applications. It has given me a balance sheet. So I'm highly dependent upon the balance sheet given by the system. I need to know whether the general IT controls are okay, the application controls are okay, because if they are not okay, the IT dependent controls are definitely not going to be okay. Because what are IT dependent controls? My manual controls, I'm preparing a report on the basis of balance sheet. I have got it from the software. If that there are errors in that balance sheet, my report is going to have errors. Even though the control is performed manually, the design and effectiveness of such controls depends upon the reliability of source data. What is source data? The data from which I'm going to prepare my report, or data fed into the system. Due to the inherent dependency on IT, what is inherent dependency? I cannot avoid it. I have to be dependent upon this IT part. The effectiveness and reliability of automated application controls and IT dependent controls
require the general IT controls to be effective. That is why they are known as pervasive controls. हर जगह चाहिए वो. They are required everywhere. General IT controls. That is why they are known as pervasive controls. Application controls की strength के लिए भी और IT dependent controls की strength के लिए भी general IT controls का strong होना बहुत जरूरी है. अगर ये strong नहीं है तो सब खराब है. ठीक? These are the types of IT controls: general IT controls, application control, and IT dependent. The application controls and IT dependent controls are almost the same. So what is more important? General IT controls. So we'll study in detail about the general IT controls as a last topic. Take the types of further the subtypes of general IT controls. Here we are. So we have understood the types of risk. We have understood the type of controls. Now we are detailing on general IT controls. So what are the types of general IT controls? The first one is data center and network operations. So how do we maintain our data? And how are the network operations carried out? What is the objective of this first kind of general IT controls? The objective is to ensure that production systems are processed to meet financial reporting objectives. Our systems, they are the production systems. We are not talking about some factory like we do in costing. Production system here means the computers which produce the reports required by us. So whatever reports are being produced by these systems, they meet the financial reporting objectives of the concern. So what are the activities covered under these controls which the organization should implement to make sure that general IT controls related to data center and network operations are strong? What are these activities? Overall management of computer application operation activities. कौन देख रहा है computers को? Computers की जो आपकी सिक्योरिटी है वो कैसे मेंटेन है? कंप्यूटर्स पे काम कैसे हो रहा है, किस टाइप का प्रिंटर है, किस टाइप का कंप्यूटर बनाया जा रहा है, क्या मेमोरी, क्या ड्राइव, उसकी किस तरह का आप उसको रख रहे हैं, क्या आपने आउटसोर्स किया हुआ है कंप्यूटर की मेंटेनेंस को, वट एवर. ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एक्टिविटीज कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर. बैच जॉब्स, आपका जो काम हो रहा है, जो आप रिपोर्ट्स ले रहे हैं, जो आप डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, हाउ इज इट बीइंग प्रिपेयर्ड, हाउ इज इट बीइंग शेड्यूल्ड एंड हाउ इज इट बीइंग एग्जीक्यूटेड. आप बैंक में जाइए, आप जाके बैठिए, आप देखिए वहां पे बहुत सारे चेक्स इकट्ठे रखे हुए होते हैं, बहुत सारे चेक्स क्लियरिंग के लिए आए होते हैं, उनके पास इकट्ठे होते हैं. एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बाद वो चेक्स पियोन लेके जाते हैं, शेड्यूल किए जाते हैं चेक्स का. नेफ्ट आरटीजीएस शेड्यूल की जाती है बैचेस के अंदर बैंक्स में. आप नेट बैंकिंग चलाइए बैंक की, उसके अंदर भी आएगा बल्क नेफ्ट, बल्क आरटीजीएस. मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन के सब एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है इस दिन 1 तारीख को, नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डे आई हैव टू क्रेडिट सैलरी इनटू देयर बैंक अकाउंट्स. दैट इज अ बल्क ट्रांसफर. तो कैसे वो वोचर्स बनाए जाते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वोचर्स हैं चाहे फिजिकल वोचर्स हैं, हाउ आर दे शेड्यूल्ड एंड हाउ आर दे एग्जीक्यूटेड बाय योर सिस्टम. द बेस्ट एग्जांपल इज इनकम टैक्स रिफंड. Or when you pay through apps like UPI apps, there is an error and they said you will get the refund in your bank account if a particular payment was unsuccessful, although the amount is debited from your end, but it is hanging somewhere at the bank's end, and when the position is clear it will be credited back to your account. Who is doing all this? The system itself. How are the backups maintained? Controls to monitor what is the frequency of backups, what is the duration, what files, what data is backed up, how it is being stored, how it is being retained, how the data is being retrieved, who is retaining it. It is stored. We used to have floppy disk CDs in the 20th century.
when computers were introduced. Now we had pen drives. Now we have small that cards, memory cards. Now we have clouds. So how is it being stored and how is it being retained and by whom? Performance monitoring. How are the systems performing? Check upon that. Is the operating system, the health is okay, the database is okay, networks are okay? How many breaks were there? What was the frequency when two computers were not able to network with each other? There was a connection error. The operating system did not respond. What is the plan for recovery from failures? The business continuity plan and the disaster recovery plan. There was an earthquake. There was a fire in the office. Tsunami was there. Tsunami affected that area. So, physical failures as well as technical failures. What is the company's plan in process to overcome, to recover from that failure? Have you thought of an alternate site working place? Is the data being stored at a different place? What is the business continuity plan your company having? How will you be able to continue the business in case of such failure? If there is a disaster, how do you recover from the disaster? What is the plan in force which you will execute? Have such plans been prepared by the company, the client? Help desk functions, recording, monitoring, and tracking of any problem shared by an employee with respect to working of the systems. Is there a proper mechanism to help them with the working of the system? It is being properly recorded, monitored, and tracking. You call up a customer call care center, it says आपकी कॉल गुणवत्ता ट्रेनिंग के लिए रिकॉर्ड की जा रही है. रिकॉर्डिंग, मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग. आप हेल्प डेस्क पे कॉल करते हैं, बैंक के, कार्ड के, फोन के, व्हाट डू दे से? रिकॉर्ड की जा रही है. बिकॉज ऐसी कोई प्रॉब्लम किसी को दोबारा आती है, दे ट्रेन देयर एम्प्लॉइज हाउ डू यू इंटरेक्ट विद द कस्टमर, हाउ डू यू सॉल्व देयर प्रॉब्लम. द सेम इज विद इन द organization. Service level agreements. What are service level agreements? As I told you, you have those outsourcing agreements, monitoring and compliance, documentation, operation manual, service reports. So these are the activities that are covered under this particular type of controls, which are data center and network operations, and these are all general IT controls. Darshan production systems, as I told you, the computer, the information systems which are producing information for us, the computers, the machines which are giving us information, data. These are production systems. Coming to the next part of general IT controls, program change. If you change a particular software, a particular program already running in the organization. Let us take an example. You planned a tour with your friends. You said, first we'll go to the restaurant, we'll have something to eat, then we'll go to the garden, then we'll go to the zoo, and in the night we'll come back home. Now something happens and now you change the program. Say, we'll go to the zoo first, then to the garden, and then we'll have something to eat. We'll sit at a night place, chit chat, and we'll eat something, and then we'll come back home. हम अपनी डेली रूटीन की लाइफ में यूज करते हैं ना, प्रोग्राम चेंज हो गया, अब ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, अब इस तरह से नहीं उस तरह से चलेंगे. सेम हैपेंस विद द प्रोग्राम्स इन कंप्यूटर सिस्टम्स. आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम वर्ड लिखा हुआ है, PROGRAM.
Himanshu, you can take it either ways. They are just talking about the batch request. Whether you take the example of employees who are doing the tasks, whether you take the example of task which is being done, you can take anyone in the chain, the production chain, any example. Okay, Himanshu, your example is also fine. We can take it at any level. The main thing is how is it being programmed and sequenced and executed. So tell me, Mr. Pathak, if you agree with me. अच्छा, एक चीज और, then another tip. Okay, so we have this, right? I'm not using my pen, so please bear with me. It's got something, there is a problem with the pen, right? So I'm using the system's pen only. Please bear with my handwriting. What is the difference between this program and this program? Can anybody tell me? I've written program and program. How many of you use these two words interchangeably? How many of you? आप में से कितने लोग हैं जो लोग इन दोनों वर्ड्स को कहीं भी आपस में बदल लेते हैं, यूज कर लेते हैं? क्या आपको लगता है कि ये दोनों वर्ड्स अलग अलग यूज किए जाने चाहिए? प्रोग्राम एंड प्रोग्राम. Come on, I'm going to tell you one of the tips, which is the biggest mistake, a blunder done by the CA students in exam. Darshan, I know. Difference is two letters, I mean. See, this is a general word. You have read about audit program in chapter 2 or 3. हम डेली भी बात करते हैं आज का क्या प्रोग्राम है, right? That is a program. This is something which is related to technology. This one, it is related to technology. आप जब प्रोग्राम चेंज लिख रहे हैं आईटी के रेलेवेंस में, आप कभी भी ये वाला प्रोग्राम वर्ड यूज नहीं करेंगे. ईआईएस का आपका सब्जेक्ट है. ऑडिट के अंदर जब ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की आप बात करते हैं, स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी में या कहीं इन हेस्ट यूज दिस वर्ड with reference to IT. No. This is where your marks get cut. Professionally, this is a software program, computer program. इसके स्पेलिंग यही है, आप डबल एम ई नहीं लिख सकते. That is an English word. Audit program, right? इस चीज का आप ध्यान रखेंगे. आप जनरली जब कोई वर्ड यूज कर रहे हैं प्रोग्राम रिलेटेड, तब आप ये यूज कर सकते हैं. बट आप आईटी के अंदर, ईआईएस के सब्जेक्ट के अंदर, या जब भी आप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स को रेफरेंस दे रहे हैं, तब आपका यही वर्ड यूज हो, ये वाला नहीं यूज होगा. अगर आप वो यूज करते हैं डबल एम ई, मार्क्स कट. ठीक, इसका आप ध्यान रखेंगे. चलिए, तो प्रोग्राम चेंज की हम बात कर रहे थे. प्रोग्राम चेंज में हमारे पास क्या ऑब्जेक्टिव है? टू इंश्योर दैट मॉडिफाइड सिस्टम्स, अगर हमने कोई चेंजेस किए हैं कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर, पहले से कुछ नया मॉडिफिकेशन किया है, तो वो नया मॉडिफिकेशन हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रहा है. कंटिन्यू, पहले भी जैसे हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे थे वैसे हो रहे हैं. ऐसा ना हो मैंने कोई नया प्रोग्राम चेंज डाल दिया उसके अंदर और मैं बैलेंस शीट ही नहीं निकाल पा रहा हूं.
मैं कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज आपस में सेट ऑफ ही नहीं कर पा रहा हूँ, ट्रांसफर एंट्रीज नहीं कर पा रहा हूं मैं, तो मेरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं हो रहे हैं। तो मैंने जो प्रोग्राम चेंज किया, आई नीड टू रिकंसीडर दैट। तो कंप्यूटर के प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप कोई चेंज लाते हैं और वो चेंज की वजह से हमारा जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव है वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इट शुड कंटिन्यू टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो इसके अंदर एक्टिविटीज क्या कवर होती हैं? वेरी गुड मनीषा। नो दर्शन, नो, program related to IT is not program. Don't play with words. A computer program is a computer program. That is it. It is program. Khatam. Activities. Okay. So what activities are considered in program change? Change management process. So how was the change carried out and how is it being managed? So program change करना है, सॉफ्टवेयर के अंदर कोई चेंज लेके आना है, कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं। So how is the process being handled, managed? आप डिफाइन करेंगे कौन से प्रोग्राम्स चेंज किए जा सकते हैं, which programs can be changed as per the requirement, what are the roles of the persons who can effect such program change and what are their responsibilities. तो हम डिफाइन करेंगे ये पहले, it would be our first step. Then चेंज के लिए रिक्वेस्ट कैसे की जाएगी, हाउ इज द रिक्वेस्ट बीइंग मेड दैट वी नीड टू चेंज, अपडेट दिस प्रोग्राम, राइट? वी आर वर्किंग विद एन ऑब्सोलीट सॉफ्टवेयर, वी आर वर्किंग विद ऑब्सोलीट कमांड्स, वी नीड टू चेंज। अगर आप बैंक ऑडिट करेंगे तो आपको पता चलेगा फिनैकल के जो वर्जन आते हैं, चेंजेस होते हैं फिनैकल के अंदर। टैली अगर आपने कभी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज किया हो तो पहले टैली, अब आज की डेट में प्राइम यूज होता है, पहले एंटरप्राइज था, प्राइम यूज होता है, कमांड्स थोड़ी डिफरेंट हो गई हैं। सो एक रिकॉर्ड रखा जाएगा, अभी चेंज रिक्वेस्ट की गई थी, उसको मैनेज किया गया, ट्रैक किया जाएगा अभी उस रिक्वेस्ट का क्या किया जा रहा है, वेदर दैट रिक्वेस्ट इज वायबल और नॉट। आप चेंजेस करेंगे, एनालाइज करेंगे उन चेंजेस की क्या रिक्वायरमेंट है वाकई, डिजाइन करेंगे चेंजेस को, डेवलप करेंगे उन चेंजेस को। आपने चेंज कर दिया प्रोग्राम के अंदर, राइट? पहले आपने डिफाइन किया उस चेंज को कैसे हैंडल किया जाएगा, फिर आपने रिक्वेस्ट को ट्रैक किया, फिर आपने चेंज किया। अब चेंज किया है उसको टेस्ट भी तो करो, शुडंट इट बी टेस्टेड? ये ना हो मैं बैलेंस शीट मांगू और मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस दे, गड़बड़ ना हो जाए जैसे रॉबर्ट मूवी में हुई थी, बनाया तो जनता के भले के लिए था, लास्ट में वो क्या करने लग गया, इविल वर्क्स के लिए यूज होने लग गया। तो यू हैव टू टेस्ट द चेंजेस। आप एक टेस्ट प्लान बनाएंगे, अलग अलग टेस्ट सिनेरियोज बनाएंगे, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन टेस्टिंग करेंगे, यूनिफॉर्म UAT इज यूनिफॉर्म एप्लीकेशन टेस्टिंग। थ्रू आउट द एप्लीकेशन आप एक यूनिफॉर्म टेस्ट प्रोसीजर चलाएंगे। अगर आपका टेस्ट सक्सेसफुल होता है, if it runs successful, you will apply the changes in production. Now here production again, computer systems. You will leave a scope for emergency and minor changes. इमरजेंसी और माइनर चेंजेस के लिए आपकी कंपनी में क्या पॉलिसी है, उसमें इन सब के थ्रू ना जाना पड़े। आग लगी है, ऑथराइजेशन थोड़ा ना लेंगे, पानी दे दो, पानी भरना है फिर पानी डालना है, आग लगी है पानी डालना है, फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है, उस टाइम परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आग लगी है तोड़ना है हैमर से और फायर एक्सटिंग्विशर निकालना है। सो इमरजेंसी और माइनर चेंजेस के लिए कंपनी की क्या पॉलिसी है जिसके लिए इन एक्टिविटीज इस प्रोसेस के थ्रू ना जाना पड़े। आप प्रोग्राम चेंज को डॉक्यूमेंट करेंगे, यूजर टेक्निकल मैनुअल्स रखेंगे और अपने यूजर्स को ट्रेनिंग देंगे, भैया ये नया सॉफ्टवेयर है, इट इज अ न्यू सॉफ्टवेयर विच इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों को 2 से 3 दिन ट्रेन किया जाएगा, या जो लोग इन सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा इस नए सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है। जब ऑर्गेनाइजेशन का लेवल बढ़ता है, वो सैप या ईआरपी इंप्लीमेंट करते हैं तो अपने सब एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देते हैं। दैट इज ऑल्सो प्रोग्राम चेंज। आप एक छोटे सॉफ्टवेयर से एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर पे माइग्रेट कर रहे हैं,
आपके एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप ट्रेनिंग भी देंगे उन्हें। शुभम, ये सब एक्टिविटीज मैनेजमेंट करती है, ऑडिटर नहीं। ऑडिटर तो देखता है भी ये एक्टिविटीज हो रही है प्रॉपरली या नहीं हो रही है, ये कंट्रोल्स है। ऑडिटर सिर्फ कंट्रोल्स को चेक करता है, कंट्रोल्स बनाने और इंप्लीमेंट किसने करने हैं, मैनेजमेंट ने। तो शुभम, द आंसर इज मैनेजमेंट। ऑडिटर ये नहीं कर रहा है। ऑडिटर को पता होना चाहिए भी मैनेजमेंट ने किया हुआ है नहीं किया हुआ, या इससे रिलेटेड रूल्स बनाए हुए हैं नहीं बनाए हुए। ठीक, ओके। थर्ड वन, access security, the most interesting and the most important and the easiest. What is the objective? To ensure that access to programs and data is authenticated and authorized to meet financial reporting objectives. The persons should be properly authorized and access is authenticated. How is authentication done? How is authentication done? Authenticated with the use of passwords, pins, biometrics. That is authentication. If I have been authorized to enter the server room, I'll go to the server room. The security staff will not stop me. I'll have access to the server room because I have been authorized. Further, how am I authenticated? By the use of biometrics or passwords or card entries. So access to your programs and data is properly authenticated and authorized in the organization. So आप क्या एक्टिविटीज चेक करेंगे? आप चेक करेंगे एज एन ऑडिटर क्या कंट्रोल्स इन प्लेस है बाय द मैनेजमेंट. देयर इज अ प्रॉपर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज बीइंग मैनेज्ड. द वर्क ऑफ CISO. There are proper security policies and procedures in place. Application security, data security, operating system security, network security, internal network and perimeter network. आपका Wi-Fi, your Wi-Fi should be password protected. Your LAN should be password protected. A competitor company will come into your around your premises and log into your system using your open LAN. If you have no network security, anybody can mess up your data. So your internal network as well as perimeter network, there should be network security. Physical security, so access controls. As I told you in my example, who can access the server room? In server room, how do you maintain the temperature and all the environment all around? And system administration and privileged accounts, like I told you, person B being granted person A granted person B's computer access. Sister admins, DBAs, database administrators, super users. So who has been given what access? Who has been given what access, right? This is all controls to be put into place by the organization, and as an auditor, I have to check the strength of these controls. Okay, it's quite simple. Access security. Who can enter my home? A person can enter my home by ringing the doorbell. It's fine, but has he got the authority to enter my room? Yes, he has got the authority to enter my room because he is my brother. Has he got the authority to enter my room? Yes, because he's my friend. But I will authenticate his entry by telling my family, yes, he is my friend. Okay, my friend, you can come to my room. That is access security. Dharshan, privileged accounts, as I told you the example of BA, person A who is superior to person B in hierarchy, person B is superior to person A in hierarchy. Person A cannot access some systems which person B can in the organization. So person B is on to some vacation with his family and he has given person A the access to his systems. Okay, you are not authorized, but you can authorize, you carry out the work using my system.
That is privileged access. That is called privileged access. You have been given the privilege. You are not authorized, but you have been given the privilege, and that is what can lead to errors, mistakes, and frauds in the organization. What is system admin? System admin who has control over the programs over the system, who can make changes to the system. Right, Bhumika? He is the person who have passwords to the system, who can make changes to the programs or the softwares if he is authorized as system admin. The last one is application system acquisition, development, and maintenance. So if you want to acquire a system or develop a system in-house, and how do you maintain it? The objective is to ensure that systems are developed, configured, and implemented to meet financial reporting objectives. So what do we do? Overall management of system development activities. So even this part, application system development and maintenance, there is a proper chapter in your EIS. How do you acquire the system rights? How do you develop the system in-house? How do you maintain that system? There's a proper chapter in your EIS on this. Okay, or a part in some of one of the chapters. So overall management of development activities. How do you initiate the project of building the system in-house? System here means computer systems, yeah, big machines. That is analysis and design of the system, getting the system constructed, testing of and quality assurance from the system, data conversion, converting the data from the older system to the newer system, go live decision, and documentation and training with respect to that particular system. Let's just give me an example of the income tax website. In the year 2020, from June 1 to June 6 or 7, the income tax website was not available for any kind of work in India because they had built in a different website and it was under testing phase. The data was being migrated. The data was being migrated from the old website to the newer website. So for a year or so, there were many problems with that particular website, many problems which were solved, which were addressed from time to time in a timely manner. So the income tax website was converting data, whatever it had, from the older to the newer website, income tax department. That was a data conversion process. They had tested and were assured of the quality. On 7th of June 2020, they took the decision of going live in the public. And on the website, there are training videos available. How do you need to access the website and its features? That was go live decision. So this is an example which we could relate with application system acquisition, development, and maintenance. Okay. So this was general IT controls, data center and network operations, program change, access security, and system application acquisition, development, and maintenance. कंस्ट्रक्शन इज दैट ओनली पाठक साहब. कंस्ट्रक्शन का मतलब वही है, आपने जो नया सॉफ्टवेयर बनवाया है या आपने जो नई वेबसाइट बनवाई है या इन हाउस बनाई है या नई सिस्टम बनाया है, दैट इज कंस्ट्रक्शन. आई होप पाठक जी आई एम क्लियर. कंस्ट्रक्शन का मतलब these four are general IT controls. Application controls and IT dependent controls or whatever we did over there, that was enough for that. Now the last part for today, how does the auditor performs his audit test to check the strength of controls?
Part 2 was risks. We read about the risks. Controls. We read about the controls. Now the last part is how does the auditor test the controls. I hope you all would have read about this in your chapter 4. I suppose you have read about it. Inquiry, inspection, observation, reperformance. With respect to controls, also auditor performs these control tests. Inquiry, inspection, observation, and reperformance. Should I take that up again, or you have done it in your chapter 4? Just let me know. Then we'll conclude today's session. The balance part of the chapter will be taking up in the next lecture on day after tomorrow, 20th of April. Just tell me, have you read about these testing methods? Inquiry, inspection, observation, reperformance in the previous chapters. Come up with your replies, only then I'll be able to understand whether I need to take up this topic or not. Yes, Darshan says already done in chapter 4. That is why I don't want to repeat it. You can read it. I'll be uploading the notes of this chapter by tonight or by tomorrow. You can go through those notes. Okay. And just let me know before we begin with our balance part during the next lecture. First 5 to 10 minutes or 15 minutes, whatever be your queries are, we'll be addressing those queries from today's session. Okay. Testing of internal controls. Everybody says testing of internal controls. Pathak ji says have done in 3 but in a summary way would be better. हाँ सर जो मिलता है दे दो. Okay, fine. So inquiry, you inquire the people in the organization about various controls. How do you request the senior? By writing an email. You give them questionnaire, just fill it. If you are on a leave, who do you tell? If the biometrics are not performing properly, what is the mechanism to address it? Observation is I'm just observing in the organization who's accessing what system, are the CCTVs working, if somebody is entering the company without any biometrics or without even the security staff is sleeping over there, anybody can enter the company and start working on the systems. I can observe that around me. Right? Reperformance is something I'll ask some of the employees to sit with me, and whatever work he is doing, I'll repeat that on my own. I can ask them to repeat it in front of me, whatever work you have done. Inspection is I'll go through the documents, the evidences, I'll create samples, right? I'll check all the records relating to those risks and controls. So जब हम इफेक्टिव और एफिशिएंट की बात कर रहे थे, जब हम इफेक्टिव और एफिशिएंट की बात कर रहे थे, द कंसेप्ट वाज इंपॉर्टेंट. क्यों इंपॉर्टेंट? बिकॉज यहाँ पे आता है, और ये जो पार्ट है मोस्ट फेवरेट विद ICI एग्जाम्स. इंक्वायरी इज द हाईएस्ट, द मोस्ट एफिशिएंट method but the least effective, and reperformance is the least efficient but highly effective. इंक्वायरी मोस्ट एफिशिएंट क्यों है? क्योंकि आप बहुत जल्दी इंक्वायर कर सकते हैं, वर्बली इंक्वायर कर सकते हैं, रिटर्न में उनको दिया फॉर्म भर के दे दो 10 मिनट में. सो इट इज हाईली एफिशिएंट बिकॉज बहुत कम टाइम लगता है, बहुत कम टाइम में बहुत इंफॉर्मेशन ली जा सकती है. बट ये इफेक्टिव, लीस्ट इफेक्टिव क्यों है? इसके रिजल्ट्स पे हम क्यों रिलाई नहीं कर सकते? इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड विद रिजल्ट्स, क्योंकि इंक्वायरी में सामने वाला इंसान झूठ भी बोल सकता है, वो हमें किसी और डायरेक्शन में भी लेके जा सकता है.
और बहुत ही ज्यादा जल्दी हो जाता है, तो ये लीस्ट ऑडिट एविडेंस दे सकता है। इसलिए इंक्वायरी अलोन कभी भी नहीं यूज की जा सकती, इसको हमें अदर मेथड्स के साथ यूज करना है। अब रीपरफॉर्मेंस इज द मोस्ट इफेक्टिव, ऑब्वियसली मोस्ट इफेक्टिव, बिकॉज हम साथ में बैठे हैं एम्प्लॉय के, जो भी काम हो रहा है, जो भी कंट्रोल टेस्ट हो रहा है, हम साथ में उसको रीपरफॉर्म कर रहे हैं। बहुत टाइम लग रहा है, हम रीपरफॉर्म कर रहे हैं, और रीपरफॉर्म करने में हमारे सामने एनी हाउ कंक्लूसिव रिजल्ट आएगा दैट दिस कंट्रोल इज स्ट्रॉन्ग और वीक। पर रीपरफॉर्म करने में एक पर्टिकुलर प्रोसेस को कितना टाइम लग जाता है, दैट इज वाई रीपरफॉर्मेंस इज द लीस्ट एफिशिएंट, हाईएस्ट इफेक्टिव बट लीस्ट एफिशिएंट, बिकॉज टाइम बहुत जा रहा है। हमें एक ऐसा टेस्टिंग मैकेनिज्म चाहिए जो एफिशिएंट भी हो और इफेक्टिव भी हो। सो we apply inquiry in combination with inspection that gives the most effective and efficient audit evidence. Inquiry in combination with inspection दोनों को यूज किया जाता है ऑडिटर के द्वारा. Auditor uses inquiry in combination with inspection to give the most effective and efficient audit evidence. ऑडिटर और बहुत चीजों को ध्यान देता है, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एनवायरनमेंट, उसे क्या एविडेंसेस चाहिए, क्या हिस्ट्री है फ्रॉड, एरर और मिसट्रीटमेंट की कंपनी में, बिजनेस कितना कॉम्प्लेक्स है, किन एजर्शंस को एड्रेस कर रहा है, और इन सब टेस्ट को ऑडिटर डॉक्यूमेंट जरूर करेगा SA 230 के अकॉर्डिंग अपनी ऑडिट फाइल में. So with respect to the testing methods, this part is the most important. Okay. So we have some practice question. I'll share it with you with the notes. I suppose this is all for today's session. And if there are any doubts, you can always jot them down, and we'll discuss those queries before the start of the next session. In the next session, we will be completing this chapter. We'll be working on some questions, and we'll be working on a case study as well from this chapter to understand the concepts and the examination style practice in a better manner. Okay? Any doubts as of today? Otherwise, we may conclude. Please. Fine. Good night, everyone. Take care.